Good morning, students. This is Anil Kumar Soni, and today I will continue the same exercise 7.3. Five questions we have completed in the last class. The sixth question is question number 6, which A part is y equals to x to the power y. Now this is our question and we want to find dy upon dx means differentiate with respect to x. Then x to the power y का differentiation हम कैसे करेंगे? If constant की power variable हो, if the power of variable is constant, so if the power of variable is constant, then we apply the formula is x to the power n. d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, देन कांस्टेंट आगे आ जाएगा और जितनी भी पावर है उसमें से वन पावर लेस हो जाएगी. इफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है एंड देयर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, देन वी डिफरेंशिएट एज a to the power x, a to the power x log a base c. बट यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, x is variable and y is also variable, then we can't apply the differentiation as x to the power n. हम इसका डिफरेंशिएशन x to the power n वाले फॉर्मूले को भी अप्लाई करके नहीं कर सकते हैं. रीजन, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए. x वेरिएबल है बट उसकी पावर कांस्टेंट नहीं है, देन वी नॉट अप्लाई द फॉर्मूला एज a टू द पावर x, बिकॉज़ a टू द पावर x अप्लाई होने के लिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होनी चाहिए. पावर वेरिएबल है बट बेस अपना कांस्टेंट नहीं है, देन वी कांट अप्लाई द फॉर्मूला like as x to the power n, या we can't differentiate x to the power y like as x to the power n and a to the power x. So फिर डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो ये बात ध्यान रखिए, जहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, जहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए वहां आपको डिफरेंशिएशन लॉग लेकर करना है, देन वी टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड. रीजन समझ में आया है? ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई क्यों नहीं हो सकते? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, देन वी अप्लाई x टू द पावर n. कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, देन वी अप्लाई a टू द पावर x. बट यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सो वी टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड. log y equals to log x to the power y. Then log y, then the property of log is log n to the power n. Then power आगे आ जाएगी n log n. Okay. Then y log x. Okay. Then log x to the power y. Then the rule of log m to the power n is n log m by log x. Then differentiate with respect to x. Then the log y as a log x, because we know the differentiation with respect to x is log x. So हम log y का नहीं जानते, कोई बात नहीं, log x की जैसे कर लेते हैं, जिसको x एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन फिर हम x के रेस्पेक्ट में रिपीट कर देंगे. Then log x as log x 1 upon x 1 upon y and the y is dy upon dx. Okay, then y into log x, this is the variable, y is variable, log x is variable, means two functions are multiplied fx into gx. y को लेफ्ट किया log x का 1 upon x प्लस log x को लेफ्ट किया y का dy upon dx. then we find the value of dy upon dx, then dy upon dx वाले टर्म्स एक साथ रहेंगे, विदाउट dy upon dx वाले टर्म राइट हैंड साइड में 1 upon y dy upon dx माइनस log x dy upon dx equals to y upon x. Then we take the common dy upon dx. Then 1 upon y minus log x equals to y upon x. Then we take the LCM is y. Then 1 minus y log x
dy upon dx equals to y upon x. Then dy upon dx, then we transpose this bracket, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, 1 minus y log x. Then our answer is y square upon x bracket 1 minus y log x. This is the differentiation of y equals to x to the power y. Okay, clear? जहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो आपको log लेके डिफरेंशिएशन करना है. Okay, noted. The B part of question 6 is x to the power a multiply y to the power b equals to x minus y की whole power a plus b. This is the same question of example 14. Example 14 का first part of same ही question है, x to the power a into y to the power b equals to x plus y के whole power a plus b. x minus y को only x plus y से replace किया हुआ है, same question है. Okay, then we differentiate this function and find the value of dy upon dx. Okay, then x to the power a is constant, then x to the power n, y to the power n means इसमें x to the power n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. x minus y is variable and the variable की पावर a plus b is constant, then we differentiate like as x to the power n. किया जा सकता है बट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा या लेंथी हो जाएगा, देन हम इस क्वेश्चन में भी लॉग अप्लाई करके ही इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि आप x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है. रीजन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, x की पावर n है, वेयर n इज कांस्टेंट, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को लॉग लेके कर रहे हैं क्योंकि लॉग लेके करने से क्वेश्चन थोड़ा सिंपल बन जाएगा जिससे हम इजीली डिफरेंशिएशन कर पाएंगे. सेम एज एग्जांपल नंबर 14 जो आप बुक में देख सकते हैं. टेकिंग log on both sides, log x to the power a into y to the power b equals to log x minus y की whole power a plus b, where the property is log m into n equals to log m plus log n. means function multiplying में हो then log m plus log n, and the second property log m to the power n, then n log n. Okay, log m to the power n means कहीं भी log में पावर है तो आगे आके log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, then log m into n log m plus log n, log x to the power a plus log y to the power b equals to पावर आ गया ही a plus b log x minus y. Okay, log m to the power n a log x. Okay, जहां भी आपको log के साथ किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर दिखे उस पावर को आपको आगे लेके आना और log के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. because we apply the property log m to the power n is n log m, n log m, a log x plus b log y equals to a plus b log x minus y. कहीं ऐसे मत नहीं कर सकते कि log x minus y से मल्टीप्लाई हो रहा है then log x minus log y. विदाउट डोमेन log का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जब तक उसके साथ आगे कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं आएगा log का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. ऐसा नहीं कि log अलग है x minus y अलग है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जिस्ट. देन डिफरेंशिएट with respect to x, then a constant log x का 1 upon x,
बी कांस्टेंट log y का एज ए log x 1 अपॉन y एंड y का dy अपॉन dx. ओके, a plus b is a constant. Then log x minus y, where x minus y behave as a x, then we differentiate as a log x 1 upon x minus y. अब हमने x minus y को as a x assume किया, then we again differentiate x minus y. There is two terms, then we apply the bracket. x का x के रेस्पेक्ट में 1 और y का dy upon dx. Okay, clear? a into 1 upon x, a upon x plus b upon y dy upon dx equals to a plus b into 1 upon x minus y, then a plus b upon x minus y, then a plus b upon x minus y multiply with the 1 and minus dy upon dx. A plus b upon x minus y multiply with the 1, then we get the same result, a plus b upon x minus y, and a plus b upon x minus y multiply the dy upon dx. Then we separate the term dy upon dx terms on the left hand side and without dy upon dx वाली terms का transpose right hand side में कर देते हैं. b upon y dy upon dx plus a plus b x minus y dy upon dx equals to a plus b upon x minus y minus a plus b upon x minus y minus a upon x. Then we take the common dy upon dx. Then b upon y plus a plus b upon x minus y. Then we taking the LCM is x minus y, a plus b multiply with x and minus a multiply with x minus y. Okay, LCM is y x minus y. Then y से y cut x minus y multiply with the b and a plus b multiply with the y dy upon dx equals to ax plus bx minus ax plus ay upon x minus y. Then ax to ax cut bx plus ay upon x minus y, and where dx minus dy plus ay plus by upon b को x minus y से किया bx minus by plus a plus b को y से किया plus ay plus by upon y x minus y dy upon dx. Okay, dy से dy cut, then bx plus ay upon y x minus y dy upon dx equals to bx plus ay upon x minus y. Then we find the value of dy upon dx, then we transpose this bracket, and bx plus ay is multiplication, so वो divide में जाएगा and y x minus y divide में, then it goes into the multiplication. bx plus ay to bx plus ay cancel, x minus y to x minus y cancel, then the dy upon dx equals to y upon x. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना सा है, y upon x. ओके, इनको सिंपल क्वेश्चन है. सेम एग्जांपल नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्टली x टू द पावर कांस्टेंट है, सो वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ ए डिफरेंशिएशन इज x टू द पावर n. बट हमने फिर भी इस क्वेश्चन को लॉग लेके कर रहा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. मतलब जो क्वेश्चन लॉग लेके किए जा सकते हैं, कांस्टेंट वाले भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल
की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन है वो हमेशा log लेके ही होंगे, उनको x टू दी पावर n और a टू दी पावर x की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं किया जा सकता। देन we taking the log on both side, log xa into yb equals to log x minus y की whole power a plus b। firstly we apply the property log a into b log x into y log m into n, मींस फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है। log x से प्लस log yb इक्वल्स टू पावर होती है log में वो आगे आ जाती है a plus b log x minus y। then we differentiate with respect to x, a constant log x 1 upon x, b constant log y 1 upon y dy upon dx। a plus b constant, then log x minus y differentiate as a log x 1 upon x 1 upon x minus y, and x minus y assumed as x, then we again differentiate x minus y with respect to x, then x1 and y dy upon dx। सिंपलीफाई किया, dy upon dx वाले टर्म्स को सेपरेट किया, एलसीएम लिया, ट्रांसपोज किया, then all the terms are cancelled, bx plus ay to bx plus ay cancel, x minus y to x minus y cancel, then we get the answer dy upon dx equals to y upon x। okay, noted। Question number 7, part A, y equals to, this is the explicit function, ठीक है, explicit function है, then y equals to e to the power x into the power x square into the power x cube into the power x to the power 4 plus into the power x to the power 5। this is our question। and b part, y equals to root of e to the power root x। then this is our two question, and this type of question you have already done in exercise 7.2 7.1। ओके, 7.1 में ऑलरेडी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। देन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास में मैंने आपको राइट करवाया था, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, a to the power x log a base e, a to the power x log a base e। constant की पावर वेरिएबल लाइक e as a constant, then e to the power x, e to the power x log e base e, and the value of this is 1। so the differentiation of e to the power x is e to the power x। so firstly e to the power x का e to the power x dy upon dx, and e to the power x square का कैसे होगा, we don't know the differentiation e to the power x square, we know the differentiation e to the power x, कोई बात नहीं, x square को as x assume कर लीजिए, then e to the power x e to the power x, but x की जगह मैं x square लिखूंगा। आफ्टर देन जिसको मैंने x assume किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, then x square का डिफरेंशिएशन 2x। सेम इसी तरह आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। then e to the power x cube as a x cube behave as a x, then e to the power x is e to the power x means e to the power x cube, and after then we x cube assume as a x, then x cube differentiate then 3x square। so आपको इस तरह रिपीट करना है। and the b part of is y equals to root e की power root x, then differentiate with respect to x, then we don't know the differentiation is square root of e की power root x, we know the differentiation of root x, we know the differentiation of root x, so this is behave as a x, and the differentiation of root x is 1 upon 2 root x। okay, the differentiation of root x is 1 upon 2 root x, but the value of x is e की power root x। then we assume e की power root x as a x, then we again differentiate of e की power root x। okay, but we don't know the differentiation e की power root x, we know the differentiation e to the power x, e to the power x, then this bracket behave as a x, then e to the power x is e to the power x, and the value of x is
root x. After then we differentiate d upon dx in root x. Okay, clear? Firstly, we will differentiate as a root x, and the differentiation of root x is 1 upon 2 root x, and the value of x is e की पावर root x. अब हमने e की पावर root x को x एज्यूम किया है, तो वो अगेन डिफरेंशिएट होगा. देन e की पावर root x का डिफरेंशिएशन किया, बट वी डोंट नो द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर root x. वी नो द डिफरेंशिएशन e की पावर x, e टू द पावर x. Then e to the power x, then root x we have as a x, then the e की power x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, but x की वैल्यू root x है. अब हमने root x को x एज्यूम किया, तो at last we differentiate root x, and root x is 1 upon 2 root x. Okay, clear? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं. Then the 8th क्वेश्चन पार्ट ए, वो भी सिंपल क्वेश्चन है, वो भी आपको करना है. पार्ट y इक्वल्स टू, जहां भी एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, मींस जहां सिंगल सेपरेट x में कोई फंक्शन बना हुआ है, तो हम उसको फंक्शन ऑफ x, मींस जो भी क्वेश्चन है वो एज ए फंक्शन ऑफ x मींस fx, एंड fx कैन बी रिटन एज ए y. देन y इक्वल्स टू cos x upon log x. So this is very simple question. Then we differentiate with respect to x, then dy upon dx, where we apply the formula fx upon gx. Okay, gx को लेफ्ट करना है, fx का डिफरेंशिएशन करना है, then apply the negative sign. अब जिसका किया था उसको लेफ्ट करना है, और जिसको लेफ्ट किया था उसका डिफरेंशिएशन करना है अपॉन gx का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर, log x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस cos x log x का 1 अपॉन x, इसका एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, अपॉन में log x का होल स्क्वायर. ओके, क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है. अब इसका बी पार्ट देखिए. This is a very important question, B part of question 8, like the 10th का first part. क्वेश्चन नंबर 10 का A पार्ट और 8 का B पार्ट सेम क्वेश्चन है. y equals to root x की पावर root x की पावर root x की पावर root x की पावर, then it goes to the infinite series. Okay, the question number 8 is y equals to root x की पावर root x की पावर root x की पावर root x की पावर root x. और इस तरह पावर अपनी कहां तक टेस्ट कर रही है, कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक. तो मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इनफाइनाइट में से 1 माइनस कर दूं, देन वी गेट द आंसर. इनफाइनाइट क्या होता है? इनडिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है. इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते. देन इनफाइनाइट में से 1 माइनस कर दिया जाए, देन वी गेट द इनफाइनाइट. क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है? जो कभी लास्ट ही नहीं होता, जो कंटिन्यूअसली आगे तक चलता ही जाए, देन दिस इज द इनफाइनाइट. और जो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, कभी लास्ट नहीं होगा, और वो डिफाइन भी नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं कि इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव क्या होता है. और उसमें से -1 कर दिया जाए, देन वी गेट आल्सो इनफाइनाइट. ओके, अब मुझे एक बात बताइए, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ये अपने इनफाइनाइट तक जा रही है. यदि उसमें से मैं इस रूट एक्स को कम कर दूं, तभी रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक. और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल. देन वी कैन राइट दिस y इक्वल्स टू रूट एक्स की पावर y. लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल्स टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर इनफाइनाइट. ओके, अब मैंने इसको कम कर दिया, मतलब इस रूट एक्स को मैंने अलग से हटा दिया, तो अपने पास क्या बचा? रूट एक्स की पावर 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 इनफाइनाइट. देन दिस इज आवर क्वेश्चन.
root x की power, root x की power, root x की power, root x की power, and this series goes to the infinite or infinity. Then the value of this is y. Then the value of this is y. ओके जो नीचे का रूट एक्स था, फर्स्ट नंबर का रूट एक्स था, इसको मैंने क्वेश्चन से रिमूव कर दिया। मैं जितने भी रूट एक्स की पावर की फॉर्म में जा रहा है अपनी इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट में से 1 को मैंने माइनस कर दिया, देन तभी इनफाइनाइट ही रहेगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में, y के इक्वल गिवन। इनफाइनाइट में से कम कर दिया जाए देन इट इज आल्सो इनफाइनाइट। तो इस स्टार्टिंग वाले रूट एक्स को मैंने सेपरेट किया और फिर भी अपना क्वेश्चन वही दिख रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। में फिर भी अपनी सीरीज वही दिख रही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज y, the root x to the power y। ओके क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। देन दिस क्वेश्चन विल बिकम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बन गया अपना। देन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देन वी टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड। log y equals to log root x to the power y. Then we apply the property of log y log root x. Then we differentiate with respect to x. Log y as a log x, 1 upon x means 1 upon y, and y is dy upon dx. There two functions multiply, then we apply the formula of fx multiply gx. fx को लेफ्ट किया, log root x का 1 upon root x as a log x. ओके log x 1 upon x, अब x हमने root x को assume किया, then 1 upon 2 root x plus log root x को हमने लेफ्ट किया and y का dy upon dx। then dy upon dx वाली टर्म सेपरेट, 1 upon y dy upon dx minus log root x dy upon dx equals to y11 y upon root x x then 2x। then we take the common dy upon dx, 1 upon y minus log root x dy upon dx equals to y upon 2x। then we take the LCM y, 1 minus y log root x upon y। okay 1 minus y log root x upon y dy upon dx equals to y upon 2x। then we transpose y square upon 2x in bracket 1 minus y log root x। okay clear, noted। सेम क्वेश्चन 6 का एक क्वेश्चन था x to the power y था और यहाँ root x की पावर y, तो सेम लॉग लेके क्वेश्चन सेम उसी तरह होगा, नॉट। इसको root x can be written as x to the power 1 upon 2, root x can be written as x to the power 1 upon 2, and according to the property of log then 1 upon 2 आगे आ जाएगा means y upon 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे then 2 minus y log x भी अपना आंसर आ सकता है। then the ninth question